Good evening, viewers. You're watching 7 at 7, the only news bulletin where I curate the day's top 7 stories for our viewers. I'm Preeti Chaudhary and these are the headlines. Kejriwal's bizarre solution to falling rupee. With months to go for Gujarat polls, Kejriwal makes fresh Hindutva push with pitch to place Lord Ganesha and Lakshmi's image on the rupee. भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगी. The Kharge era begins in Congress, takes over as Congress president in presence of Gandhi. Sonia says she is relieved to relinquish post to Kharge. Massive politics breaks out over attack outside temple in Coimbatore on October 23rd. Tamil Nadu BJP chief accuses DMK of downplaying incident. Stalin recommends NIA probe. Sources say MHA has transferred the case to NIA. Out on parole, rapist Baba Gurmeet Ram Rahim renames his daughter Hani Preet to Ruhani Di or Ruh Di. This a day after he released a new music video. It's a free run for the rapist. Rishi Sunak takes charge, faces opposition fire in first Q&A session in UK Parliament, says economy stability at the heart of his government. Opposition slams him for controversial new cabinet. In midst of dirty bomb threat, India urges Russia, Ukraine to avoid nuclear war at all costs. Meanwhile, Putin monitors nuke drills. All right, viewers, let's begin with all the latest developments that are coming in the Coimbatore blast case, which took place right outside a temple. Huge amounts of politics as well. Here's more. Days after a cylinder blast rocked the city of Coimbatore, the revelations tumbling out based on the investigation all point to a deadly terror plot. This is the moment when the car with the cylinder went up in flames on Sunday morning and one person, Jamesha Mubin, died in the explosion. But he is no innocent. Mubin has been identified as an accused as one of those who was plotting multiple attacks in the city of Coimbatore. Sources tell India Today that a note was recovered from Mubin's residence which had a list of prominent government offices and public gathering areas. Raids were conducted in several locations of Coimbatore at the residences of the 5 accused along with properties linked to relatives of the accused. Links between the 1998 Coimbatore blast in which 58 people died and this cylinder blast is also being probed as some of the accused have been linked to the convicts of the case. The police have also identified that 3 of the 5 people have gone to Kerala, meaning gone to Kerala to a prison called Viyur, where people like NIA suspects have been lodged, and these people have attempted to meet 2 people as per sources. One is Amjad Ali and the second one, very important person called as Mohammad Azharuddin, who is said to be in contact with the Sri Lankan Easter Sunday suicide bombing. An NIA team has touched down in Coimbatore, tracking all developments closely. Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin also chaired a meet, taking stock of all the updates in the investigation. But the BJP has slammed the DMK regime, questioning why CM Stalin hasn't uttered a word on the blast so far. Our state president has requested that the investigation has to be handed over to NIA. It is because of the minority vote bank politics. The chief minister is not making any statement and he is not coming here. Locals are on edge in Coimbatore as details tumble out of the deadly terror plot that these 5 accused were hatching. Multiple appeals for peace are now pouring in from prominent groups. Caste, creed or community doesn't matter. The police and the administration has to take a no-nonsense attitude in this way.
And that's the thing. We are totally in support for all these things. That's it. A city that was rocked by serial blasts in 1998 has been once again cast in the shadow of terror, raising questions as to what exactly had happened in the past 24 years. All eyes are now upon the probing agencies who have now cracked a whip on this terror plot. Vivian Daniel, Pramod Madhav, Point of View. Here's the big political story of the day. Mallikarjun Kharge has now officially taken charge as the new Congress president. Will he be a status quoist or will real change be ushered in? मल्लिकार्जुन खड़गे को जीत का सर्टिफिकेट सौंप दिया गया है. Sonia Gandhi hands over the reins to Mallikarjun Kharge. The Indian National Congress gets its first non-Gandhi chief in nearly 2.5 decades. मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि अपनी मेहनत से, अपने अनुभव से जो कुछ भी संभव होगा, मैं करूंगा. Kharge's elevation also marks a possible retirement from politics for Sonia, who took charge under trying circumstances and stirred her party to power twice. At the ceremony held at the Congress headquarters in Delhi, Sonia said the burden has been lifted off her shoulders. आज मैं इस दायित्व से मुक्त हो जाऊंगी. यह भार मेरे सिर से उतर जाएगा. इसीलिए स्वाभाविक रूप से मुझे राहत का एहसास हो रहा है. Sonia Gandhi. Even as Kharge takes charge, the shadow of Gandhi's loom large. The family was at the ceremony in full strength. Kharge's farewell gift to Sonia was a photograph of her late husband and former Prime Minister Rajiv Gandhi. His speech paid glowing tributes to Sonia. राजनीति करने वालों के इस दौर में त्याग की जो मिसाल उन्होंने कायम की है, उसका कोई दूसरा उदाहरण मिलना मुश्किल है. More importantly, Kharge's battle cry for the party too was borrowed from Rahul Gandhi's Daro Mat. कि इस भारत जोड़ो यात्रा में हर रोज लाखों लोग जुड़ रहे हैं. देश में एक नई ऊर्जा पैदा हो रही है. इस ऊर्जा को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे. Kharge also laid out his blueprint for Congress revival, more representation for the youth. 50% पद 50 साल से कम उम्र के लोगों के लिए रिजर्व रहेगी. And more party elections. चुनाव की तैयारियों के लिए भी पब्लिक इंसाइट डिपार्टमेंट और AICC इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे. ये आज के समय की एक बड़ी जरूरत है. इसीलिए इन्हें हम तुरंत स्थापित करेंगे. But will Kharge be allowed to carry out the reforms that he was promising? Even at the ceremony to elevate Kharge, the buzz was more about Rahul Gandhi. राहुल जी अध्यक्ष बने वापिस, तो वही चुनौती दे सकते हैं मोदी जी को और सरकार को, एनडीए गवर्नमेंट. लीडर वो होता है जिसको लोग पसंद करें, जिसके पीछे ज्यादा लोग खड़े रहेंगे. तो आप जिस पद में भी हों, लोग अगर इस आपके साथ ज्यादा हैं तो बड़े लीडर आप आके जाएंगे. The overhaul promised by Kharge is monumental. What he wants to do now, Rahul Gandhi himself had tried and failed earlier. One thing is certain, Kharge will need all the support of the Gandhis to execute his vision. With Mosmi Singh, Bureau Report, India Today. All right, viewers, with Rishi Sunak, Indian origin, as the next Prime Minister of UK, a big debate has started back home. Now, the latest in that, AIMIM Chief, Mr. Owaisi, has jumped in saying that he hopes that the next Prime Minister of India could be a hijab-wearing woman. Now, Owaisi made the remarks when asked to comment on Indian origin Rishi Sunak becoming the Prime Minister of UK. The BJP took a jibe at Owaisi over his comments, asking him to make hijab-wearing girl president of his party first. This comes in midst of ongoing hijab debate in the country. A two-judge Supreme Court bench on October 13 delivered a split verdict on a batch of pleas challenging the Karnataka High Court judgment, refusing to lift the ban on hijab in educational institutions of the state.
The apex court said the pleas will be placed before the Chief Justice of India for constituting an appropriate larger bench. मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेंगे बोले। मैं तो बोला हूँ ये बात। Mr. Asadin Owaisi ji, the constitution bars nobody, any woman, hijabi or gair hijabi, to become the prime minister of this country. But since we are talking about this, let's have the charity from home. When will a hijabi woman become the president of AIMIM party? Because there only one family gets to be the president. Indian origin, people of Indian roots are becoming vice president, prime minister of countries, CEOs of multinational companies. We should all be proud about this. But then there is a Bharat Badnami brigade which has a Sanki Sanak to use even Rishi Sunak issue for its political gains to play the Islamophobia card and divide and rule card in India. And one of them is Mehbooba Mufti ji, apart from Asadin Owaisi. प्रधानमंत्री के बनने पर ओवैसी कह रहे हैं कि एक दिन आएगा जब हिजाब वाली लड़की इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। कैसे? उनको पता नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र में संविधान के साथ हम लोग काम करते हैं और जिसको जनता चाहती है वो चुना जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। जनता का भरोसा लगातार प्रधानमंत्री जी पर बढ़ रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने कभी सच साबित नहीं होंगे। चाहे वो हिजाब का मामला हो, चाहे वो और कोई मामले हो, ओवैसी साहब को मैं भाजपा की बी टीम मानता हूं। ओवैसी साहब भाजपा की बी टीम है, वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं क्या कहूं उनको। ओवैसी हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक दिन भारत की प्रधानमंत्री जो है वो हिजाब पहनने वाली महिला बनेंगी। देखिए, जानबूझ के इस तरह का बयान कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर ओवैसी साहब देते हैं। उनकी पार्टी का ही नाम है, मुस्लिम के नाम पे पार्टी बनाई। वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नहीं समझते। उनको ये मानना चाहिए जब से ऋषि सुनक बने तो बयान देते हैं कोई माइनॉरिटी का बन सकता है क्या, कोई हिजाब वाली बन सकती है क्या। ये क्या संदेश देना चाहते हैं? भारत में जितने मुस्लिम को अधिकार हैं दुनिया में कहीं नहीं है। भारत में एपीजे अब्दुल कलाम हो, फखरुद्दीन अली अहमद हो, उसके पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन हो, ज्ञानी जैल सिंह हो, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कई बने हैं, एयर चीफ मार्शल बने हैं, क्रिकेट हॉकी के कैप्टन बने हैं। जितना हक भारत में मुसलमानों को मिला हुआ है या माइनॉरिटीज को मिला हुआ है, वहां दुनिया में इसकी मिसाल नहीं। देखो, लोकतंत्र में कुछ भी हो सकता है। उन्हें अगर, जैसे आपने देखा होगा कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ये मूल भारतीय हो सकते हैं, तो लोकतंत्र जहां जहां हो तो कुछ भी हो सकता है। तो उसका विरोध करने की जरूरत नहीं, आज देश को बचाने की जरूरत है। All right, viewers, one does wonder, if there's a wish at all, if a Muslim woman has to become the head of the country or the prime minister of the country, why a hijab? Isn't hijab essentially a regressive patriarchal tool? With that, let's quickly shift focus to the other big story. As many as 10 Kashmiri Pandit families have fled from South Kashmir Shopia post the recent spate of targeted killings. On October 18th, 2 migrant laborers, Munish Kumar and Ram Sagar, were killed in a grenade attack by terrorists. 2 days earlier, Kashmiri Pandit Puran Kishan Bisht were gunned down by terrorists outside his ancestral house in Chaudhryganj village. Targeted terror killings in Kashmir have spread fear amongst minorities. 10 Kashmiri families have left their villages in Shopia district in South Kashmir and reached Jammu. Kashmiri Pandits say the situation in the valley is not conducive for them to live there. The residents of Shopia who stayed back in Kashmir during the most difficult periods of terrorism in 1990s say the recent killings have led to a fear psychosis. आप पिछले 3 दशकों से, मतलब 1990 से वहीं रह रहे थे? नहीं, मैं HS कापरे, हायर सेकेंडरी कापरे में इस वक्त भी टीचर था, गवर्नमेंट टीचर हूँ मैं। हाँ। और आप कश्मीर से पलायन करके 1990 में नहीं आए? नहीं, कभी नहीं आए। नहीं, ना हमारे पास रजिस्ट्रेशन है, ना कुछ है, कुछ पैसा। क्या हुआ कि, मतलब मैं समझ सकता हूं कि आपके भाई साहब की हत्या हुई है, लेकिन अभी जो बाकी जो परिवार है जो वहां रह रहे हैं वो भी छोड़ छाड़ कर आ गए, भय इतना ज्यादा है? हाँ, बहुत भय है, क्योंकि इससे क्या हाल होगा। अब क्या होनी, भाई तो मेरा मारा गया था दिन दहाड़े गेट पर था, वो डर गए, सब लोग डर गए थे और आ गए वहाँ क्या करनी चाहिए। आपके घर में आप और आपकी पत्नी और 2 बच्चे रहते हैं? हाँ,
तो आप लोग भी अब यहाँ जम्मू आ गए? हाँ, हम एलजी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए रजिस्ट्रेशन कराओ और मेरे लिए माइग्रेशन, ताकि मैं यहाँ इन बच्चों की देखभाल आप करूँ। आप तो मेरे पास 4 बच्चे हैं। मतलब आप वापस नहीं जाना चाहते? नहीं, कभी नहीं, जिंदगी भर नहीं। आप जब पूरण जी की हत्या हुई वहीं थे आप? हाँ, बस उनसे 10 मीटर की दूरी पे था मैं। 10 से 10 मीटर की दूरी पे था मैं। आपने हत्या होते हुए देखा? नहीं, एक्चुअली मेन गेट बंद था और उन्होंने ही मेन गेट बंद करके वहां से निकल गए तो मैं वहीं पे था। वहां से जैसे ही वो निकले उसके बाद मैक्सिमम 10 सेकंड हुए होंगे, 10 से 15 सेकंड, तो गोली की आवाज़ आई। तो मैं दौड़ के गया तो वो नीचे गिरे हुए थे, तो खून बह रहा था। मैंने वैसे ही उठाया उनको बाइक पे, तो मैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर पास में है कुछ 400-500 मीटर पे, तो मैं वहाँ लेके उनको गया। तो वहाँ किसमें आपने गाड़ी में ली? बाइक पे। और एक वो उनकी सांस चल रही थी, कुछ पता चल रही थी। मेरे वहाँ पे एक लड़का आया वहीं पे, पता नहीं कहीं से आया, मेरे को समझ नहीं लगा कहाँ से। तो हम उनको प्राइमरी हेल्थ सेंटर वहाँ पे उनने पकड़ा नहीं, उनने एम्बुलेंस हमें दे दी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शिफ्ट करने के लिए। तो हम वहाँ से जैसे ही डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कितना दूर होगा वहाँ से? वहाँ से 6 किलोमीटर दूर होगा। तो हम वहाँ पहुँचे तो इन्होंने कुछ इलाज करना बोला, आप ठीक है। तो कुछ चंद मिनट बाद उन्होंने बोल दिया ये नहीं रहे आप। A big setback for the Jammu and Kashmir government and administration, as 9 more Kashmiri Pandit families have migrated from the Chaudhry Gund village of Shopian district in South Kashmir. Chaudhry Gund village of the South Kashmir was one of the villages in South Kashmir where Kashmiri Pandits resided despite all odds. Even they did not migrated in 1990. But on the 15th of October in the same village, a Kashmiri Pandit was shot dead, which has created a fear among the other community members, and they have decided to migrate from the village. And during the last 2 nights, 9 families have migrated from the Chaudhry Gund village of the Shopian district in South Kashmir. The administration is not so far saying anything about this migration, but many organizations of Kashmiri Pandits have raised the questions on the government and its attitude towards the settling of Kashmiri Pandits in Kashmir. With Tariq Ashraf Ani, India Today in Srinagar.